Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee from Pune. And in continuation with our Kennedy Commando, and what is happening in America is really horrifying, and it will have a cumulative effect on the entire world. A country like Kenya, it has castigated World Health Organization Dr. Tedros as useless fellows, though he belongs to the same continent, stating we are no more guinea pigs. How they have been tested through the tetracycline tetanus vaccine and of vaccine after vaccine at the cost of health of Kenya. Likewise, many other countries have also come forward to move away from WHO mandate, which has been dictated by Dr. Fauci, CDC, and FDA. That is why Dr. Kennedy was very categorical and clear. My children were also vaccinated. We are not against vaccines. Something which is good for prevention, it is almost welcome. But something through natural immunity, through good and natural food, if we can sustain, why should we have chemical toxins into our body? That was his question when he was responding to the Senate for his nomination. The same goes with us. The science and the truth both were buried during COVID-19. And what a better example, Mr. Donald Trump, and how Biden's administration could ignore such things. From utero to 12 months, for all American kids, 72 vaccines are injected into the body, leading to so many disorders now which American children are facing. Not only American, that Canada, and Canada's ex-premier and his father were into pharma, and how they have benefited from pharma. That funding helped them politically to survive. And through this show, I'm demanding the entire world first question Dr. Tedros, WHO, and all those right from US to India government officials, politicians, and their families, what vaccines they have taken. That is more fundamental. And what does these vaccines contain is also more important. If you say it is going to be a game changer in the prevention, why not you reveal the contents? And then every individual citizen across the globe has a right to life and health, and he will decide whether that sort of prevention he needs or natural immunity through which he wants to survive. DRTSPR channels, through wonderful guests like Dr. Amitav Banerjee, we have never ever tried to impose anything except speaking science, truth, and logic. And we have been inviting everyone to dispute us, to prove us wrong, right from 2020. My number is 9440465339. We want enlightened society so that they themselves will take a decision. So we are not against the spirit of science, truth, and logic. At the same time, no question of usurping the human rights, the fundamental right to life and health, come whatever may. But what did Google and YouTube do? They tried to suppress. Let them suppress the truth now. Yeah, I'll take a foreword from Dr. Amitavji, then I'll try to show you how dangerously they were trying to suppress the whistleblowers, the truth, and why America is sick. World is sick. Now India also is going to be sick. We are exposed to 4 seasons. Our kitchen is our medicine. That means our food is our medicine. So they are trying to destroy the food through artificial seeding, genome foods, which going to destroy our guts like what has done to America. That is why Mr. Kennedy is going to be a game changer for Trump, America, and the world over. Sir, please. Thank you, Dr. Reddy. It's a pleasure to come on this channel. And as Dr. Reddy said, vaccines, अगर अच्छे से वैक्सीन डेवलप किया जाए, इंटीग्रिटी से किया जाए, साइंस के साथ किया जाए, हम हमेशा साइंस के साथ है, तो इसको एक हमारे टूल किट में, बीमारी लड़ने का एक टूल किट में है, पर इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना चाहिए, सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। और कोविड के दौरान क्या हुआ था, एक बीएमजे में रिपोर्ट है
COVID-19 researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer vaccine trial. ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, लीडिंग जर्नल है। ये है डेटेड है 2 नवंबर 2021। उसमें एक कोई जो डायरेक्टर है, शी वॉज सुपरवाइजिंग द वैक्सीन ट्रायल वेंटाविया का। आजकल क्या करते हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, ये जो ट्रायल है, इसका जो परीक्षण है, ये आउटसोर्स कर देते हैं। ये कोई प्राइवेट एजेंसीज रहते हैं, तो ऐसा एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया है, जो ट्रायल के दौरान दो ग्रुप में, एक को वैक्सीन एक को प्लेसिबो, और उसके साइड इफेक्ट्स देखना, उसका बेनिफिट देखना, ब्लाइंडिंग होना चाहिए, पूरा उसका बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। तो अभी क्या है कि जो साइंटिस्ट है, जो एकेडमिशियंस है, उनके पास नहीं रहता है, ये सब आउटसोर्स रहता है। और आउटसोर्स में भी जो एक सेंटर था, वैक्सीन ट्रायल का बड़ा सेंटर था, वहाँ पे एक डायरेक्टर है, ब्रुक जैक्सन है, ये लेडी है। शी सेड कि देवर डूइंग ट्रायल विदाउट इंटेग्रिटी, कोई काफ़ी बेईमानी से ट्रायल कर रहे थे और ट्रायल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे, डेटा को फॉल्सिफाई किया था, ब्लाइंडिंग को उसने ये कर दिया था, अनब्लाइंड कर दिया था। मैंने जो इन्वेस्टिगेटर है, उनको मालूम नहीं होना चाहिए कौन सा ब्लाइंडेड है, कौन सा प्लेसिबो ग्रुप है। तो वो कोर्ट को तोड़ दिया था, और साइड पेशेंट्स को ठीक से फॉलो अप नहीं किया था। करीब इनके 10 पॉइंट्स है, मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स बताता हूँ इन्होंने क्या बताए थे। तो इसके इससे पता चलता, पार्टिसिपेंट्स को हॉलवे में इंजेक्शन के बाद रख दिया था, मॉनिटर भी नहीं किया था साइड इफेक्ट के लिए, टाइमली फॉलोअप नहीं किया था वैक्सीन ट्रायल पार्टिसिपेंट को, प्रोटोकॉल से डिविएट कर गए थे जो प्रोटोकॉल था, वैक्सीन नॉट बीइंग स्टोर्ड एट प्रॉपर टेम्परेचर, मिसलेबलिंग था, और काफ़ी कुछ और भी कमियां थी। उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था वेंटाविया को, वेंटाविया ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने एफडीए, जो अमेरिका का जो एजेंसी होता है, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर जो होता है एजेंसी, एफडीए को उन्होंने ईमेल भेजा था, और उनको सुबह उन्होंने ईमेल भेजा था, वेंटाविया ने उनको दोपहर को फायर कर दिया था। शी वॉज रिमूव फ्रॉम अ जॉब। एफडीए का काम है कि आके निरीक्षण करना, एफडीए ने कोई निरीक्षण नहीं किया, और वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया। तो ये ऐसे अगर कोई साइंटिस्ट करता है, कोई एकेडमिक करता है, उसको निकाल दिया जाता है एकेडमिक से, अगर डेटा फॉल्सिफिकेशन करता कोई रिसर्च में। जबकि इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में लगे, कई फोटोग्राफ्स है, इनके पास पूरे एविडेंस के साथ एफडीए को पेश किया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे हमको फिक्र होता है कि ऐसे थोड़ी साइंस होता है, फॉलो द साइंस कहते हैं, स्पीड ऑफ साइंस कहते हैं, और ये एफडीए को जानकारी के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जो विसिल ब्लोअर था, इनको फायर कर दिया गया। इससे क्या मैसेज जाएगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, जिनका काम है निरीक्षण करना, उनको फायर कर दिया, जो ऑनेस्ट डायरेक्टर थी, जो सुपरवाइजर थी। तो दूसरा कोई, आजकल सबको जॉब का प्रॉब्लम है, आजकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कोई भी, इसका एक मैसेज ये जाता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये तो साइंस नहीं है, ये तो मार्केटिंग है, एंड मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके कि हार्म्स एंड हो सकते हैं ना, उसका सेफ्टी का साइंटिफिक एविडेंस। इससे हमारे को पूरा शक हो जाता है कि इतने फास्ट मार्केटिंग हो रहे हैं, इतने फास्ट ये हो रहे हैं, इसका क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा है। ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा हुआ है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी जो पॉलिसी मेकर्स है, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, यही बड़ा चिंता, आश्चर्यजनक और चिंता वाली बात है। वाली बात है। और and we are trying to prove to the world through Google, YouTube, how those fellows masterminded. Federal Court, US Supreme Court too took a case on this, and they have exposed after that what happened, why Biden administration compromised with Pfizer, and why CDC and Pfizer allowed this vaccine to be given to their own citizens in spite of even Supreme Court finding fault with the trials, how these trials were done, and whether life is important, and whether the trials were done on Pfizer family, Pfizer management, Pfizer scientists, American politicians, American Senate, Congress. I'm asking you all this. How did you allow this? So let us just listen to her few. My name is Brooke Jackson.
I was fired in September of 2020 for being a whistleblower. I was working on Pfizer's phase 3 pivotal trial on their COVID-19 vaccine. My first day on the job was the 8th of September. And from the very beginning, I noticed irregularities, things that were questionable. I would bring up the concerns to my managers, and it was always, we're understaffed, we're really trying hard to, make this work. At one point when I was going through emails, there were emails from ICON begging Ventavia to follow up on severe adverse events that had been reported. There were several emails about mislabeled specimens, blood specimens, and the nasal swabs. There were specimens that were labeled with another participant's information. It was a nightmare. And on the 16th of September, I stayed late in clinic one evening, and I was the only one in the clinic. I walked into an area where the vaccines were refrigerated, or frozen rather. And when I walked in, I saw a biohazard bag. The plastic biohazard bag contained used needles, and I realized how unorganized and sloppy Ventavia was handling everything. In that same room where they kept the vaccine was just left out, and the boxes that the vaccine came in, the containers, they had written the subject information on these containers. So right there, me working on the study, it unblinded me to the randomization of these patients. I made note of that. I took pictures to document what I'd seen, to show my managers. It was also discovered that Ventavia was unblinding participants in the study based on a directive from our COO, which was to print out the randomization scheme and put that drug assignment in everybody's chart. Per Pfizer's protocol, we should have immediately stopped enrolling, but they never told Pfizer. Instead, they wanted us to go through each of the charts and actually take out the randomization scheme that was printed. So that, coupled with everything else, I made the recommendation for Ventavia to stop enrolling clinical trial participants in the study until we were able to let Pfizer know. You sent me the photos, thank you, and I didn't pull them up. I mean, no, granted, that's whether I'm. I mean, so I might have. Should I not have taken the pictures? The problem is the breach of confidentiality, and it was on a personal phone, because there's sponsor information on those boxes. At that point, it was clear to me that I wasn't fitting in. I decided that next morning I was gonna report my company to the FDA. And so I did that about 9 o'clock in the morning on the 25th of September. And about 6 hours later, I got a call from Ventavia and was fired on the spot and told that I was not a good fit. I remember investigator Cannon called me, and we spoke for an hour and 16 minutes. To be precise, I can tell you everything that we talked about. It mirrored what
was typed in my formal complaint to them. The unblinding, the safety of the clinical trial participants, not monitoring them, or adverse reactions. They were late to report adverse events. Again, the untrained staff, the oversight by the principal investigators, specifically at the Fort Worth location, the targeting of the employees for coming forward. I thought that the FDA was going to swoop in and take care of everything. What I was reporting was so important. Now, this is a big evidence now how America and Kennedy is going to act against Pfizer and their sponsored company, how they were trying to belittle the word vaccines trials. Safety first, efficacy next, immunogenicity the third aspect, then peer review in smaller groups and peer review in a larger group. That means it will take not less than 10 years for any vaccine to be approved. And how is that under emergency use authorization? Such vaccines which fundamentally do not have any trial data, and principal investigators also, we don't know who they are. How did Pfizer, CDC, and FDA go ahead and administered it to their own citizens? That is mind-boggling. So I'll just try to remove this and just try to show you some other. And your comment, sir? साइंस को मॉकरी बना दिया है. दे हैव मेड मॉकरी ऑफ साइंस. साइंस को मजाक बना दिया है. और अभी जो अपोज कर रहे थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी को जो अपोज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो एंटी साइंस है. वो एंटी साइंस है और इस टाइप का मॉकरी चल रहा है. इतने मास स्केल वैक्सीन ट्रायल में खाली उन्होंने 1% इंस्पेक्ट किया ट्रायल साइट. और जिस ट्रायल साइट से कंप्लेन आया है, जो इस लेडी ने, ब्रुक जैक्सन ने बताया कि यहाँ पे गलत काम चल रहा है, डेटा फॉल्सिफिकेशन चल रहा है, ब्लाइंडिंग को अनब्लाइंड कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने इंस्पेक्ट नहीं किया और ना ही कोई एक्शन लिया और वो लेडी का जॉब भी चला गया. अब ये साइंस इंटीग्रिटी के साथ होता है. साइंस का मॉकरी बना दिया है. और अभी बीएमजे ने ये 2021 में पब्लिश किया था. आज के तारीख में बीएमजे ने भी मुकर गया. अभी बीएमजे ने ओपिनियन पीस कई साइंटिस्ट से पब्लिश किया कि अभी अगर रॉबर्ट एफ कैनेडी आ जाएंगे तो अभी ये काफ़ी कुछ पब्लिक हेल्थ वुड बी एंडेंजर्ड और ये एंटी साइंस है. इस टाइप के अभी व्यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. जबकि इसको पहले जब पैंडेमिक चालू हुआ था तब बीएमजे ऐसे रिपोर्ट लाता था, ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी, और एक एडिटोरियल भी दिया था कि महामारी के दौरान कैसे पॉलिटिक्स एंड प्रॉफिट एंड करप्शन सप्रेस्ड साइंस, इतने अच्छे लेख आते थे. अभी लगता है कि बीएमजे पे भी प्रेशर आ गया है. अभी रिसेंट कुछ आर्टिकल्स आप बीएमजे में पढ़ेंगे तो लगता है कि इनको ऊपर भी अभी दबाव आ रहा है. सो ये जो फार्मा का जो इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है, अभी ये इट इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग. मीडिया तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, अभी मेडिकल जर्नल्स भी कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये इसको ये एंटी साइंस है हम कहेंगे. Yeah. Now this you look. We are playing because our show goes with evidences. Our show goes with evidences. I want you to listen to this. COVID-19 shots in the first 18 months, 1.4 million. These are all from the public domain. And it is, now you see, Children's Health Defense, from where Mr. Kennedy has become the Health and Human Rights Secretary.
causing severe injuries and deaths, and they kept selling them to the public as safe and effective. Emails obtained by Children's Health Events reveal government's failure to monitor COVID vaccine injuries. In the first 18 months of the COVID shots, there were 1.4 million adverse event reports, and they expected up to 40% of them to be serious. There were 806,000 Pfizer adverse event reports, 491 Moderna, and 91,000 J&J. And the CDC totally predicted these adverse events. They were predicting 1,000 VAERS reports a day, they actually ended up getting 2,500. See, CDC was also predicting 1,000 adverse events, but it went beyond 2,500. I'll take your comment after that. How did CDC compromise its own citizens' health in the name of Pfizer prevention vaccines? It's a shame. And now America woke up. Now they are not going for flu shots and all, because we always say whatever is good for your health, they are supposed to decide. Now, when America is waking up, what about the world? So upsetting about this, Polly, is the lies. I mean, to me, that's what's so awful here. And it's not so surprising given what we experienced, but I think it makes a difference when you see in writing that they knew and they kept doing it. Again, I will play. CDC and Pfizer, they knew the adverse effects, but they kept doing it. CDC and Pfizer. Why? Why Biden administration could not stop? Now, what will Trump administration do with such huge data of evidence? They knew that these things were life-threatening. They knew they were causing severe injuries and deaths, and they kept selling them to the public as safe and effective. Emails obtained by Children's Health Events reveal government's failure to monitor COVID vaccine injuries. In the first 18 months of the COVID shots, there were 1.4 million adverse event reports, and they expected up to 40% of them to be serious. There were 806,000 Pfizer adverse event reports, 491 Moderna, and 91,000 J&J. And the CDC totally predicted these adverse events. They were predicting 1,000 VAERS reports a day, they actually ended up getting 2,500. What's so upsetting about this, Polly, is the lies. I mean, to me, that's what's so awful here. And it's not so surprising given what we experienced, but I think it makes a difference when you see in writing that they knew and they kept doing it. Yes, sir. In writing, it was there, but they kept doing it, Pfizer and CDC. How do you react to this? What will America has to do now? अमेरिका में गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज नहीं हुआ. CDC अभी भी 6 महीने से रिकमेंड कर रहा है कोविड वैक्सीन बच्चों को. तो पीपल हैव बिकम वाइजर, बट द CDC एंड स्टिल ऑथोरिटेरियन एंड जो साइंस बोल के कोई चीज़ नहीं रहा है. अभी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल यूज वैक्सीन है, नया वैक्सीन है, उसमें तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए. ट्रायल के दौरान भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग में भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए. और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट गए हैं. ट्रायल के दौरान हमने देखा है कि जब सुपरवाइजर ने बताया कि गलत ये हो रहे हैं, ठीक से प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहे हैं, उनको फायर कर दिया गया है. और ये अभी मजा एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन से ऐसे कर रहे हैं. उसके बाद जैसे CDC का एस्टिमेट था कि एडवर्स इवेंट्स होंगे, वो उसके बाद भी उन्होंने ठीक से मास रोल आउट कर दिया. अगर आपका नया वैक्सीन है तो छोटे छोटे ग्रुप से स्टार्ट करना था. हाई पूरे मास यंग पीपल जिनको कि कोविड का रिस्क नहीं था, बच्चों को. अमेरिका ने बहुत गलती किया है, अभी भी गलतियां कर रहा है. एटलीस्ट देखा जाए तो हमारे यहाँ बच्चों को ज़्यादा लोगों को नहीं दिया है, और हमारे यहाँ लोगों को बूस्टर भी कम लगा है. तो अमेरिका तो गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ अमेरिकन पब्लिक मस्ट हैव वोकन अप. उनको पता चल गया है, इसीलिए शायद ये रॉबर्ट कैनेडी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, ट्रम्प को शायद इसीलिए सपोर्ट मिल रहा है. Yeah. Now this is the picture. Updated for 2025. Please take a moment to really let the CDC's 1986 versus 2025 vaccine schedule image below sink in. And this only reflects vaccines during pregnancy and the first year of life. Childhood chronic diseases, many immune or immune mediated, have also exploded from 12.4%
in the 1980s to over 50% of children today. CDC and public health authorities can't tell you why, but a number of small studies support vaccines as a contributor. See, this is what American children were given. 1986, DTP 2 months, DTP 4 months, DTP 6 months, OPV 2 months, and OPV oral polio 4 months. Now 2025, 72, right from the mother, I mean the child in utero, in the mother's womb also starts taking the vaccines. What is this nonsense going on? Why there is no natural immunity? Sahaj rog nirodhak shakti nahi hai kya? That is why we were saying India is close to 4 seasons. India enjoys all seasons, right from summer, winter, everything. Our body is exposed to everything. And so that you get that innate immunity, natural immunity. Your comments are, so we did not take anything which is chemically poisoning your body, instead of having this natural immunity through all 4 seasons, which America has not got. Sir, please, your comments. नहीं, हमारा जो वैक्सीन शेड्यूल है, इम्यूनेशन शेड्यूल कई बार ज़रूरत होता है, पर दैट शुड डिपेंड ऑन द लोकल कंडीशंस, लोकल डिजीज प्रिवेलेंस। अभी जैसे आपने कहा प्रेग्नेंट मदर्स को टिटेनस टॉक्साइड देते हैं, वो अभी ज़रूरत था जहाँ पे रिमोट एरियाज में अनहाइजेनिक डिलीवरीज होते थे और न्यू बॉर्न्स को टिटेनस हो जाता था। डिलीवरी के टाइम अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट्स और काऊ डंग से कई बार वो करते थे घाव को, जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने वाले के उससे, तो उसके लिए काफ़ी हद तक टिटेनस जो नियोनेट्रम कहते हैं, बच्चा न्यूबॉर्न में जो टिटेनस होता था, जो टिटेनस वैक्सीन मदर को देते थे उससे पैसिव इम्यूनिटी मिलता था बच्चे को भी, तो काफ़ी टिटेनस नियोनेट्रम का ये कम हो गया रेट। पर अभी आपने जैसे कहा कि कई अफ्रीकन कंट्रीज में टिटेनस वैक्सीन में भी शायद कुछ हार्मोन मिला दिया था, उसका छानबीन होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। तो वो गलत ये काम अमेरिका, करने से अमेरिका मैं वो भी बताता हूँ केन्या का। ये अमेरिका आप क्या बोलते हैं? आप यू आर ए कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यू आर सो एक्सपीरियंस्ड इन दिस। 1986 जस्ट 3 to 4 doses, नहीं, 2025 अभी जो 72 वैक्सीन, doses, and अभी not देखिए disorders. 6 महीने में, Yeah, sir, please. 6 मंथ्स के बच्चे को mRNA कोविड वैक्सीन रिकमेंडेड है। उसी से पता चलता है एक कि कितना इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, इरेशनल है। वैक्सीन मैं कह रहा हूँ कि जो डिजीज, जो रिस्क है उसका ही मिलना चाहिए। अभी इसमें बच्चों को तो कोई कोविड का रिस्क नहीं है, पूरा महामारी हो गया, बच्चों में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, हेल्दी बच्चों में। अगर उनको अगर कोविड वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं तो वो अनसाइंटिफिक है। सिमिलरली कई ऐसे वैक्सीन होंगे जिसका पूरा डिजीज का फैलाव देखना चाहिए, एपिडेमियोलॉजी देखना चाहिए, कितना अगर ट्रीटमेंट है तो जिस डिजीज का उसका वैक्सीन का प्रायोरिटी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे को तो नहीं होगा, और सब बच्चे अच्छा अगर ओवरऑल हेल्थ होगा बच्चों का तो वो नेचुरल इम्यूनिटी जैसे आप कह रहे हैं या नेचुरल रेजिस्टेंस है, तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। वही वैक्सीन होना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन फेटेलिटी ज़्यादा हो और जिसका प्रिवेलेंस ज़्यादा हो। तो इसमें जितने भी अभी जैसे निमोकॉकल वैक्सीन है, आपका निमोनिया का आजकल इलाज है, एंटीबायोटिक्स है, तो उसका वैक्सीन का प्रायोरिटी लो होना चाहिए। अब और देखिए जैसे ना, हेपेटाइटिस बी, आरएसवी, हेपेटाइटिस 1, हम गट फीलिंग कहते हैं, वो तो दैट डेवलप्स ओनली आफ्टर 6 months और 7 months और 8 months। हाँ, हेपेटाइटिस बी का बच्चों में चालू किया था, पर उसको हाई रिस्क ग्रुप में ज़्यादा है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को। बच्चों में ये भी स्टडीज आए थे, हमारे इंडियन पीडियाट्रिक्स में पब्लिश स्टडी है कि बच्चों में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स उसका इम्यूनिटी बिल्कुल वेन हो जाता है। एक्चुअली बच्चे जब रिस्क में होंगे तब उनको इम्यूनिटी नहीं मिलता है। तो हेपेटाइटिस बी ऑल्सो, इसको भी फिर से रिकन्सिडर करना चाहिए, साइंस को मद्देनजर रखते हुए, उसका एपिडेमियोलॉजी मद्देनजर रखते हुए। अभी मार्केटिंग है पूरा, अभी साइंस नहीं है, अभी कोई इसका लेकिन कोई इसके इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे उनके बच्चों के ऊपर? हाउ, व्हाट आर द इफेक्ट्स? द साइड इफेक्ट्स आर माइंड ब्लोइंग, व्हिच आई विल ट्राई टू शो यू। दैट इज रियली वेरी पैथेटिक। अभी 6 महीने पहले, 6 महीने क्या 3 महीने पहले एक पेपर आया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जिसका कोऑथर प्लॉटकिंस है, स्टैनली प्लॉटकिंस। तो प्लॉटकिंस जो कि वैक्सीन के गुरु कहते हैं, उन्होंने पूरा स्टैंडर्ड किताब लिखा है। उन्होंने भी अभी कबूल किया है कि हमारे को रिसर्च करना चाहिए पोस्ट मार्केटिंग के बाद, जब वैक्सीन मास स्केल में यूज होता है। एक सुनिए सर, दिस एक सुनिए। Mr. Warner. Mr. Warner, no. Mr. Whitehouse.
Mr. Whitehouse, no. Ms. Hassan? Ms. Hassan, no. Ms. Cortez Masto? Ms. Cortez Masto, no. Ms. Warren? Ms. Warren, no. Mr. Sanders? Mr. Sanders, no. Ms. Smith? Ms. Smith, no. Mr. Warren? Mr. Warren, no. Mr. Warren, no. Mr. Warren, no. Mr. Webb? Mr. Webb, no. Mr. Chairman? Chairman votes aye. This system isn't broken. It is doing exactly what it was built to do. Look around. Children are struggling in ways we have never seen before. Autoimmune issues, ADHD, autism, speech delays, eczema, allergies, chronic fatigue, skyrocketing. Cancer in kids, unheard of a generation ago. Now a growing statistic and the industry is responsible. The ones dumping heavy metals, pesticides, and endocrine disruptors into our food, water, and medicine, untouched. No accountability, no consequences. Why? Because the same people making the rules are being paid by the ones breaking them. A recent vote could have changed that, forced more transparency, better safety regulations, actual accountability. But guess what? Every senator who voted against it funded by Big Pharma. Their loyalty isn't to public health, it is to their donors. If they actually cared about protecting us, they would be fighting for clean food and water, free from heavy metals and endocrine disruptors, medical transparency, so parents can make informed decisions, safer products for children without known carcinogens and neurotoxins, accountability for corporations that profit of sickness. But instead, the same toxic cycle poison the population, watch the health crisis unfold, then cash in on the treatment. So this is there in the public domain. And last, I'll show you the Kenya one, because there are many, say even Argentina quit WHO over COVID mishandling. It is there in the public domain. Argentina to leave WHO over COVID mishandling. And then I just wanted to show you this. Many videos are there, but no GMO, no vaccine, no fertilizer or pesticide will be used in Kenya if it is not used in its country of origin. We will not be used by anyone. We are not guinea pigs. This is what I wanted to show. No GMO, no vaccine, no fertilizer or pesticide will be used in Kenya if it is not used in its country of origin. We will not be used by anyone. We are not guinea pigs. Yeah, this is what I wanted to show you. And the last one. Kids, ingestion. Do both of you stand behind that? Dr. Caleb? I'm going to refer that to Mr. Jones. Okay. We have not evaluated Red 40 in over a decade. Over a decade ago, We have not. At FDA we have not evaluated the safety of Red 40 in over a decade. So over a decade, that was the conclusion that FDA made. But we have evaluated. We are. So it's it. FDA is caught there. Now we have 4 minutes effectively. Sir, there are many videos to prove that science was upstaged. And right from 2020, wonderful guests like you been participating on DRTSPR channels. We were trying to recommend which is science, which is truth, which is logic. And we were trying to enlighten the citizens so that they take the decisions. We never imposed. Your say, sir. FDA का काफ़ी फंडिंग होता है. फार्मा कंपनीज आर फंडिंग FDA ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और रिवॉल्विंग डोर सिस्टम भी है. FDA छोड़ के दे जॉइन दी फार्मा कंपनी से अगेन दे जॉइन द FDA. अभी जो WHO का जो जेरेमी फरार है, आई थिंक ही इज़ द चीफ साइंटिस्ट, ही इज़ कमिंग फ्रॉम वेलकम ट्रस्ट. सो वंस दे हैव द फार्मा बैकग्राउंड है तो वो अपना प्रॉफिट को पहला देखते हैं. प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स दो चीज़ है. साइंस इज सप्रेस्ड और जो टॉप लेवल में साइंटिस्ट भी है जो पॉलिसी मेकिंग में, दे आर मोर ऑफ पॉलिटिशियंस देन साइंटिस्ट. They are more of profiteers than scientists. They are more career scientists than honest scientists. So this is the problem actually. तो इसको बहुत टाइम लगेगा क्लीन करने के लिए. ये काफ़ी इसके रूट्स है, काफ़ी डीप है, काफ़ी फैले हुए हैं. It will not be easy. You mean to say, at least now,
If the government is not coming forward, एक्चुअली अमेरिका में सबसे ज्यादा वायलेशन हुए, अमेरिका में कम से कम डिस्कशन हो रहा है, हमारे कंट्री में डिस्कशन भी नहीं हो रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा, कोई नहीं, हम ब्लाइंडली आएंगे। जो वहाँ next गाइडली next series, Indian Council of Medical Research, politicians profits, we are going to expose them. Covaxin वो हो या कॉपी Covishield हो, we will just put it in अमेरिका front में of होता है, उसी से ठीक है, कम से कम उनका करेक्ट होगा तो उनका करेक्ट चीज हम फॉलो करेंगे। वी आर ब्लाइंडली कॉपिंग देयर प्रोटोकॉल, देयर सिस्टम्स, तो एटलीस्ट वहाँ पे क्लीन अप होने से अभी हमको फायदा होगा। चलो थोड़ा बहुत यही तरीका है, और कोई तरीका तो है नहीं। at least will you welcome such change in what's happening in America now? Definitely, definitely, because the world blindly follows America, particularly I mean, so-called America dominates actually. तो अमेरिका में क्लीन अप होने से डेफिनेटली होगा, पर दैट आल्सो विल बी डिफिकल्ट। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो अच्छे वैक्सीन है, सम वैक्सीन आर रियली लाइफ सेवर, वो भी बदनाम हो रहे हैं। Unfortunate, that is very unfortunate. Very We unfortunate. require to clean the system rather than throw away the baby with the bath water. पानी गंदा है, पानी को साफ कीजिए, पानी के साथ बच्चे को भी ना फेंक दीजिए। कि अभी जो एक बैकलैश चल रहा है कि सभी कुछ गलत है मॉडर्न मेडिसिन में, सभी कुछ गलत है वैक्सीन में, इसको भी रोकना चाहिए। हम एक एंड से दूसरे एंड में नहीं जा सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी Yeah. objective, not take any sides, try to get the best evidence available without taking any sides. We have to be neutral. Or Dr. TSPR channel is always promoting that neutrality, We are objectivity. independent. We are independent, sir. We are independent. We Oh, make yeah, shows yeah. and we want people to decide, citizens to decide. And at the same time, like you, we have been requesting all pharma and insurance also, rightly said, don't throw the baby and that water out situation you should land. We want you to practice absolute science, which is truthful, which is logic, and which is always transparent and accountable. You clearly put out what are there, the safety aspects, the efficacy aspects, immunogenicity aspects, peer review in smaller and larger groups, and what are those contents which are there in the vaccine. That is more fundamental. And where is the placebo group? Candidate vaccine and then placebo and intermediate groups. How the trials are going on, where the trials are going on. We are not guinea pigs to trial on us any new invention just for the sake of profits and politicians at the cost of health of not just America, the world over. Thank you very much, sir. Do support DRTSPR channels. Thank you. Thank you. And we are open for any discussion. Anyone can participate and discuss and debate and differ with us. We welcome it.